rejoignant le Népal et la petite ferme biologique de Jintapu, dans les montagnes de la région d'Ilam à l'extrême est du pays, j'entrais dans la peau d'un volontaire avec l'idée d'aider un projet qui a du sens pour moi, d'apprendre beaucoup de choses sur les techniques de travail et de partager une expérience humaine magique. Durant les quelques 10 heures d'avion, 22 heures de bus, 2 heures de taxi et 5 minutes de marche pour arriver à la ferme, on a le temps d'idéaliser ce qui va nous arriver, de penser aux longs moments de partage, de rire et de joie, à ce que l'on va faire, à ce que l'on va apprendre, à ce que l'on va devenir. On a le temps de créer une expérience que l'on n'a pourtant pas vécue et dont on ignore tout. À partir de là, naît l'imprévu. Le mode de vie ici, c'est un autre univers, quoi. Et c'est vrai que c'est
on savait bien qu'il y a des gens qui ont des modes de vie différents, qu'il y a des gens qui vivent à la dure. Mais c'est vrai que c'est surprenant au final en arrivant. Il y a ce mix de modernité dans le sens où on est arrivé ici via Internet. On a contacté ces gens par un truc qui est un moyen qui, de notre point de vue, c'est un truc hyper moderne, ce truc de notre génération, de voyager facilement, de contacter les gens par Internet, d'arriver dans un nouvel endroit. Et t'es arrivé ici et en fait c'est une autre époque quoi. L'idée là, c'est tu vas couper les feuilles, c'est pour nourrir la vache quoi. Et il n'y a pas de rapport à l'argent, il n'y a rien, c'est juste qu'il faut faire les choses parce qu'on a besoin maintenant quoi. एकछिन हजुर बत्ता फेर्छु ल कसको गाडी कस्तो एक दिन सकिँदा नखाँदा चाहिँ झन् हुन्छ त्यो अब झन् त्यही दिन चाहिँ चाहिन्छ के नखाए जस्तो भयो राखेर छन् क्या रोटी ल्याइदिएर राखेर छन् भन्थ्यो के भाउजूले सुनाउँदै थियो अनि दुईटाले चाहिँ अघि हिँड्नुभयो स्कुल ए र पो हिजो पनि चिट्टै एउटा कुन सरलाई लिएर आउँदै हुनुहुन्थ्यो ए अनि बाबा चाहिँ किन बिहानै आज त भन्नुहुँदै थियो होइन अरू ठुला क्लासलाई गाडी बस्नुभयो अन्त भयो गोबर काटिदिनु भने कि हिजो पनि दिनभरि मकै रोप्दा सत्तर भनौँ मकै रोपिसकेर अलिअलि खन्दै गर्नु न मैले काकाले त हिजो खनेछ नि त सारा ती सुँगुरलाई लिन आएको भन्दै आउँदै थिएँ ल सुँगुरलाई दिँदैन कि क्या सुँगुरलाई दिन्छ नराम्रो त त्योहरू मैले ठिक ए ओके फिनिस्ड मै सक्छ अब उहाँले रोकेर कहाँ भन्नुहोस् त तपाईँको सरल गर्नु भन्यो भने मान्छे बुझ्नु भने अलिक पनि यो प्रक्रिया तपाईँको समाजतिर बसिरहेको छ त्यसलाई आफ्नो तर्फबाट त्यो साझा नै हुनुपर्छ भन्ने छैन आफ्नो तर्फबाट मैले त्यस देखाएको छैन तर अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि त्यस्तो खोजिरहेको हुनसक्छ यो पनि ल्याएको त
Et ce décalage est ouf, quoi. Enfin, le truc, la cuisine, enfin, le bâtiment de la cuisine en bambou et en terre battue, là, c'est pas de frigo. C'est autre chose. And a lot of it, I imagine, is not yet known. You know, like when you're in the experience, you don't realize. For example, I didn't realize the value of heat when I was in New York. It was just there. It just comes on and you're like, oh, it's warm. Even though it's snowing outside, you're warm. Here, making heat is a work. You go cut wood for hours. You go make a little heat fire thingy. And you suffer the smoke. And it makes you aware of the heat that you had, which you don't have anymore. In New York, I make a lot of critical, institutional, intellectual art that's kind of detached from the everyday life. It's more philosophical. So over here, I wanted to make something that makes sense. Moi, j'ai l'habitude de travailler dans l'industrie où il n'y a pas le même ressenti au niveau de l'utilité du truc. Tu sais pourquoi tu fais les choses, quoi. Le travail est vraiment dur, c'est vraiment très physique. I work physically decently hard here, and I wake up at like, 6:30 and go to bed at 8, which is very different from my regular schedule. Over there, I wake up at like 8 and I go to bed at like 2 a.m., you know? So, in a way, energy-wise, I do a lot more there. I mean, I'm always out. I'm very active. On s'y s'arrête jamais. Et ici, tu dis qu'ils connaissent que ça.
Et en plus, effectivement, avec les moyens qu'ils ont et les conditions, tout est dur, quoi. Tous les matins, se lever, la nuit, il fait froid, les lits sont durs, tu te lèves le matin. Faut aller bosser toute la journée, là. Okay. And now light then. Lost my worker. Voilà body. होला भोलि राम्रो हुन्छ होला
I work under the pressure. You work under the pressure. You're under surveillance now. Quick, speed. Alright, fine, you lost the attention. Now it's cat time. Qu'il est beau ce chat. Il est chiant mais il est beau. Il est chiant mais il est beau ce chat. Il est collant. Il pleure tout le temps. Il a faim tout le temps. Des fois on le voit pas pendant 3 jours. Des fois on voit que lui pendant 3 jours. Ça empêche de dormir, ça empêche de travailler. Mais il est mignon quand même. Il est mignon. Il est mignon. Pédalou. I think there's this overall feeling of peace. And I feel peaceful. I don't feel as anxious. Even freaking animals are peaceful here. Like, it's ridiculous. Like, the dogs don't bark at you in the street. They're like quiet. They're like, hey, I'm okay. Life is good. But when you're away from it and you realize that all of these little things become very significant, and they start to gain these level of importance because you're in a foreign land, you're far away, you start paying attention to the little things that you would not pay attention otherwise. And I think it's possible to do that while you're living at home also. And I hope and I wish to take this level of attention, this level of excitement about living every day back when I go back, and actually treat each day with this level of, wow, another day. I get to go cut cow food, you know? It's like an exciting adventure. It's not a mundane chore because it's new. And it's just a change in perspective. For people, they do this every day. For them, maybe it's the same thing. I don't know, maybe it's not, because here people are always laughing, always smiling, always. It's good. I enjoy the energy that's here and the less existential anxiety. I feel that I'm faced with a lot of worry at home about unnecessary things, and for some reason, when you're placed in a context of the mountains, I guess, it falls away. It's not really it's important, but it's not pressing in a sense. It's slower. You plan and you work. Simple.
नमस्ते Daura Techa ठिक छ सर पुरा भिडियो गर्दो रहेछ नि त दाउरा काटेको ठिक छ सर मेरो साथी नै हो नि त भिडियो गर्दैछ क्या बुढोले पुरै भिडियो गरिरहेछ बुढैले के खालको बुढो रहेछ हौ भिडियो रेकर्ड पो गर्दैछ क्या रेकर्डिङ रेकर्डिङ हाम्रो छ भने हेर्नु है दाजु खिचेको यस्तो नाचेको पनि देखाइदिउँ न भरे हेर्दा पो हाँसु त अहिले त वास्तव फिल्मै बनाएको काकी यसले हो त फिल्मको टाइटल एक्सन देखाउनुपर्छ क्या यस्तो एक्सन देखाइदिउँ त दाजु हाम्रो सब ठिक छ नि माइला The other thing that I'm realizing is that these relationships that you have with people, they're so meaningful, so simple, little things, just a little hello and a little chat. Picture, all picture. Video धन्यवाद. How are you? Fine. Fine? Yes. Video ठीक है Subodin Pour nous les volontaires, l'aide consistait d'abord à aider la famille dans la ferme, pour les besoins primaires quotidiens. Le volontariat, c'est aussi un échange culturel, une ouverture mutuelle. Nous avons appris et partagé. Appris par exemple qu'il n'y avait aucun système de récupération et de tri des déchets, que le plastique, même dans ces montagnes, est omniprésent, et que les habitants n'ont d'autre choix que de les enfouir. Nous avons partagé des idées sur la nocivité du plastique, sur les moyens de limiter leur impact ou sur la possibilité d'améliorer un peu le confort. Nous avons partagé également des idées plus légères, telles que mettre en valeur le travail de la ferme, ou partager de nouvelles expériences sur nos cultures respectives. Painted signs that are the medicinal plants that this farm produces, and it's going to be posted around, and I do hope that they bring smiles for the people in the years to come. You know, I put a decent amount of time and energy into it, and I'm pleased with what came out with my very, very, very basic resources. I'm cutting wood with a handsaw, whereas I'm used to cutting wood on like a really expensive table saw that cuts it in like 3 seconds, not even 2 seconds, and makes it perfect. Whereas now, I'm like cutting wood, it takes me 2 hours to cut 20 pieces. It's just different, you know, but I'm still delighted that it's possible. I tried cooking many times, burned a shit ton of food, but eventually made a pizza. And I was very happy that I could do that, and
the Nepali family here has never had a pizza. And it was, I don't know, I'm just really fortunate to be able to share that experience through something I love. I like cooking, but it's been a really difficult time trying to cook. It's hard to make cooking on a fire. I'm used to it, ovens and electricity. उसलाई बिरुवा लिएर गएर कलेजमा त्यतिकै रोप्दै त्यो एकैछिनलाई हो सुरुदेखि त पोतो त आउँदैन पनि बाटेमा रहेछ त्यो जले हेर्नु फेरि गोट्याएर भने गोठतिर दुई झ्याङ त राम्रै बिरुवा छ त्यो देखिँदैन जरा हाम्रै उ त्यहाँ बाटेकै छेउमा चाहिँ ठिङलिङ जराबाट जोडिएको रोपेर त कहाँनेरि त्यहाँ पल्लै छेउमा त्यहाँ त खारेर ढुङ्गा मात्रै थुपारेको छ बालुवा थकै लाग्यो बस्यो अहिले साबनै अनि सिएम घरको दुई घर नै ल्याएका अरे 3 घर 2 रुपियाँ दुई रुपियाँले त्यही पनि 2 रुपियाँले त घरकै 2 रुपियाँले के सँग गर्नु हो नि अनि फेरि सागहरू पकाउनु पर्यो भने अनि यो बसेको कुरै नगर्नु अस्ति त 8 बजे ठ्याक्कै पुरेर थिएँ बाहिर फेरि अहिले त्यो पर आमासँग गरेका रहेछन् सबै सिरान घरका तिनै घरका रहेछन् 2 रुपियाँ ब्याजमा पैसा लाउनु पर्ने अरे always eat with Very bad diet, very bad food. Out. Get out. Peaceful. यसको भारी कति छ I feel more purposeful. I feel tired, but this tired where you are happy that you're tired, that you have accomplished a day. It's kind of like when you finish a project and you're like, yes, that was a good project. I feel I accomplished today. There's more of that feeling. Little things give you more happiness, more feeling of peace. And yeah. So not like I'm happy. Not like that kind of happy where I'm just like smiling all day, but this feeling of good. एउटा चाहिँ कुनै छैन No. Only one, yeah. No. Yeah. And Fold. Outside, gonna fold. Again fold. And down. Kapsa. 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 Same kapsa. 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 Same kapsa. Outside. Outside. Kapsa. 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 You look. Yeah. Good. Good. Good or not good? Good. 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 Quand j'ai frappé à la porte du Népal,
je pensais apprendre des tas de choses sur l'agriculture biologique. Faire le plein de savoir et de savoir-faire, avoir des relations fortes avec les gens, découvrir leur motivation, ce qui les fait vibrer dans la vie. Mais dans les environs de Jintapu, ce genre de raisonnement est étranger. On ne voit pas les choses de cette manière. On vit au jour le jour avec cette idée de travailler pour satisfaire ses besoins primaires. L'agriculture biologique, projet positif, n'a ce nom que pour des personnes comme moi. Pour les habitants de ces montagnes, c'est simplement la vie. Contrainte au minimalisme, à la débrouillardise, où il faut se lever chaque jour pour manger, boire, se chauffer, où la question du bonheur ne se pose pas, où les préoccupations sociales, écologiques du monde semblent bien loin, tout comme les sentiments de désir ou d'envie. J'ai découvert un autre état d'esprit, un autre regard sur la vie. Pas mieux, ni moins bien, juste autre chose qui m'a apporté beaucoup de paix.